Hello students, greetings from Indore Public School. In the last video class, we have discussed about the digestive system, its parts and the meaning of digestion. We have also discussed about the teeth, right? Now, let us talk about the rest of the parts of the alimentary canal. First, let us begin with the leftover parts in the mouth. Tongue. Tongue is a freely movable muscular organ, right? It is attached to the floor of the buccal cavity with the help of frenulum. You can see in this diagram just how can you find out frenulum in your mouth. Just stand in front of the mirror and move your tongue up, है ना. मिरर के सामने खड़े होकर अगर आप अपने टंग को ऊपर करेंगे तो नीचे आपको एक लाइन दिखाई देगी. That is the frenulum by which the tongue is attached to the floor of the buccal cavity. The tongue consists of small projections which are known as papillae, right? And these papillae मतलब छोटे छोटे outgrowth दिखेंगे. Tongue जो है it is not smooth, right? तो ये जो outgrowth है papillae है उसमें taste buds present होते हैं. Taste buds जो हैं they are connected to the brain through the nerves, right? And whatever we eat, the sensation is received by the taste buds and it is carried to the brain where we analyze the food, whether it is salty or sweet or sour, okay, or hot or cold, right? And accordingly we react because no reaction is possible without the instructions of the brain, right? So whatever we eat, the taste buds send the instruction to the brain and accordingly we show our reaction. Fine. Now next part of the alimentary canal is the pharynx, right? We are discussing about the parts of the alimentary canal. Later on we will talk about the different digestive glands, right? So let's talk about pharynx. Pharynx, as I have already told you, pharynx is a small common pathway, okay, that is common to the respiratory system and the digestive system, right? So it is a common passage for digestive and respiratory system, right? A part of the pharynx open into esophagus and the another part opens into the glottis. Glottis is the mouth of the विंड पाइप, ठीक है. जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लोटिस. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फेरिंग्स है. फाइन. फेरिंग्स जो है वो माउथ और नॉस्ट्रल्स दोनों से रिसीव कर रहा है. नीचे जाके फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. वन पार्ट गोज टू द इसोफेगस एंड अनदर गोज टू द ग्लोटिस, ठीक है. नाउ ग्लोटिस. ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप. जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लोटिस. ग्लोटिस के ऊपर एपीग्लोटिस होता है, राइट. दिस एपीग्लोटिस is a flap like tissue. It is a flap like cartilaginous structure which guards the glottis, ठीक है. आप एपीग्लोटिस को देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है. ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. वेनेवर वी ईट एनीथिंग, जो बोलस होता है, बोलस क्या है? बोलस इज द स्ट्रक्चर विच विल, बोलस इज अ स्मॉल बॉल ऑफ फूड, स्मॉल चंक ऑफ फूड विच इज स्वॉलोड. तो हम फूड को बोलस के फॉर्म में स्वॉलो करते हैं. तो वेनेवर वी ईट फूड, दिस बोलस पुशेस द एपीग्लोटिस डाउन. द एपीग्लोटिस इज पुश्ड डाउन बिकॉज ऑफ विच द ग्लोटिस इज क्लोज्ड, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं एपीग्लोटिस को. तो जब हम स्वॉलो करेंगे तो ये एपीग्लोटिस जो है वो नीचे की तरफ पुश होगा और नीचे की तरफ पुश होके ये क्या होगा? ग्लोटिस को बंद कर देगा. ग्लोटिस क्या है? इट इज़ अ ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, राइट. तो इसके कारण सिंस ग्लोटिस विल बी क्लोज्ड, सो व्हाट विल हैपन? द फूड विल ओनली एंटर इनटू द इसोफेगस. इट विल नॉट गो इनटू द windpipe, because if the food will enter into the windpipe, that can create lot of problem, right? That is a big problem for you. So it will lead to choking, ठीक है. तो इसीलिए
जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस नीचे पुश होता है फूड से और विंड पाइप क्लोज हो जाता है, राइट। दैट इज़ वाई व्हाट हैपन्स समटाइम्स जब आप खाना खाते समय हंसते हैं या बात करते हैं, राइट। तो वेन एवर वी लाफ और वेन एवर वी स्पीक, air comes out through our mouth, right, and when air will come out through your mouth, so the epiglottis cannot close the glottis properly because epiglottis जो है वो ऊपर की तरफ push होगा, तो because of that what happens when we swallow the food may enter the windpipe, ठीक है, और food windpipe में enter हो सकता है जिसके कारण क्या होता है, we cough strongly, है ना, बहुत एक strong cough आता है जिसको हम बोलते हैं ठसका लगना। तो ये कफिंग का पर्पस क्या है, द पर्पस इज टू ब्रिंग द फूड बैक, फूड को वापस विंड पाइप से निकालना और टू मेक इट मूव इनटू द फूड पाइप विच इज द राइट पाथ। ओके फाइन, इन दिस डायग्राम अगेन यू कैन सी दिस क्लियरली, फेरिंग्स you can see, right, then the windpipe and then the food pipe, ठीक है। नाउ esophagus is a muscular tube like structure, ठीक है, which passes through the diaphragm। diaphragm क्या है, एक muscular partition होता है जो कि हमारे trunk portion को दो cavities में divide कर रहा है। the upper cavity is the chest cavity, right, or the thoracic cavity, and the lower cavity is the abdominal cavity, ठीक है। तो ये जो esophagus है ये this is around 30 centimeter long and it takes the food to the stomach, right, it also passes through the diaphragm, fine। now when the food passes into the stomach it is guarded by the esophageal sphincter। esophageal sphincter जो है वो stomach के opening को close करता है, it fine। so it is made up of sphincter muscles, right। so when the food from esophagus enters into the stomach the sphincter is closed, ठीक है, sphincter close हो जाएगा and because of this closing of the sphincter the food cannot return back into the esophagus, right। esophageal sphincter is also known as gastroesophageal sphincter, fine। now the muscular action by which the food enters into the stomach, that muscular action is known as esophagus, right। now what happens, esophagus is made up of very soft tissue, soft material, so esophagus is not able to maintain its structure, fine, so that the food can easily drop into the stomach, right, so that is not possible। so whenever we swallow a wave of contraction passes into the stomach, right, एक contraction का wave जो कि food के ऊपर से start होता है, right, and it moves down, right, and it ends up after the food enters into the stomach, so this wave of contraction is known as peristalsis or peristaltic action। तो esophagus में peristaltic action होता है। peristaltic action क्या है, it is a wave of contraction and relaxation of the muscles, circular muscles which are present in the wall of the esophagus, right, and it brings the food down into the stomach, okay। next talk about the stomach। stomach, it is a J-shaped organ, right, as you can see in the diagram, fine। it lies just below the diaphragm, है ना। esophagus जैसे ही diaphragm क्रॉस करता है तो it opens into the stomach, right। now stomach has three parts, fundus, cardiac and pyloric, right। stomach के तीन parts होते हैं, fundus, cardiac and pyloric। fundus is the upper part, fine, above the level of the joining of esophagus to stomach, right। you can see esophagus stomach में कहाँ open हो रहा है, तो उस ओपनिंग के ऊपर का जो पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज फंडस, राइट। द मिडल पार्ट इज अ कार्डियक पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इज नोन एज पाइलोरिक पार्ट, फाइन।
The upper part, as we have discussed, it is a gastroesophageal sphincter which brings the food into the stomach, right? As the sphincter opens, you can see how it closes. Fine. After the food enters into the stomach, the esophageal sphincter closes down. You can see the closed down esophageal sphincter here. Okay. Now the food gets digested into the stomach. After the digestion, the food has to enter the small intestine, the anterior part of small intestine, which is called duodenum, है ना. स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में ओपन होना है. ठीक है. तो अगेन इट विल ट्रैवल थ्रू अनादर स्फिंक्टर विच इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि स्टमक में दोनों ओपनिंग्स में स्फिंक्टर हैं. जहाँ से ईसोफेगस एंटर कर रहा है फूड को स्टमक में, दैट स्फिंक्टर इज नोन एज ईसोफेजियल स्फिंक्टर, and the part from where the food leaves the stomach, that is sphincter is known as pyloric sphincter, right? Pyloric sphincter will control the food to go into the intestine. Fine. It will not allow the food to enter into the intestine till it is digested in the stomach. Stomach में जो digestion होना है, जब तक वो complete नहीं हो जाता है तब तक food को intestine में allow नहीं करेंगे, and that is controlled by the pyloric sphincter. Now let us talk about small intestine, right? The small intestine is the longest part of the alimentary canal. Still it is known as small. Why? Because its lumen is narrow as compared to the large intestine. Large intestine के comparison में उसका lumen पतला होता है, इसीलिए उसको small intestine बोलते हैं. It is around 7 meters long and it is highly coiled structure. 7 meters is very long, right? But still it can get accommodated in a very small part. Why? Because it is highly coiled, है ना. 7 meters बहुत लंबा पार्ट होता है, लेकिन वो बहुत छोटे से एरिया में आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इट इज 7 मीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन diameter. This small intestine is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. सबसे ऊपर का पार्ट होता है duodenum, राइट, जहाँ से जो स्टमक से फूड को रिसीव करता है. देन द मिडिल पार्ट इज jejunum and the last part is ileum. Okay, so whatever we have studied just now, let us give a small recap to that, right? We will talk about the rest of the parts of alimentary canal in the next class, right? So we have discussed the tongue. ठीक है. Tongue is a freely movable muscular organ. Fine. It is attached to the floor of the buccal cavity by a streak which is known as frenulum, right? Now this you can easily see in the as you stand in front of the mirror, right? Tongue has some raised structure, some projections. These projections are known as papillae, है ना. टंग के ऊपर, टंग बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, उसमें आपको कुछ रेज्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको बोलते हैं पैपिले. ये जो पैपिले है इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो टेस्ट बड्स है, थ्रू नर्व दीज टेस्ट बड्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, है ना. हमने गस्टाटरी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था क्लास 10th में. सो द गस्टाटरी रिसेप्टर्स take the sensation of taste to the brain. Pharynx is a small area which is a common passage for digestive and respiratory system both. ठीक है. pharynx में 3 पार्ट होते हैं. ठीक है. nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Nasopharynx is the upper part of pharynx. ठीक है.
जहाँ पे कि फेरिंग्स ओपन होता है. ओरोफेरिंग्स is that part of the pharynx, middle part of the pharynx, where the mouth opens into the pharynx, and laryngopharynx is that part of the pharynx where it divides into two. Okay, the esophagus and the windpipe, trachea. ठीक है, तो pharynx has three parts: oropharynx, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Nasopharynx is that part of pharynx through which the nostrils open, upper part. ठीक है, जो आप upper section of pharynx देख रहे हैं, that is known as the nasopharynx, right? Then the middle section of pharynx you can see in the diagram, that is known as the oropharynx. It is that part of pharynx where mouth opens into the pharynx, right? And the lower section of pharynx, what you can see in the diagram, is the laryngopharynx, where it will divide into two. Okay, one part will enter into the esophagus and another part will enter into the trachea, right? The opening of the trachea is known as glottis. Okay, where it is also the opening of the voice box, that is larynx. ठीक है, now this glottis is guarded by a cartilaginous structure called epiglottis. जैसे ही हम फूड को swallow करते हैं तो epiglottis जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है. फाइन, दिस epiglottis is pushed down, right, and the food enters into the esophagus, right? This epiglottis, as it will be pushed down, it will close the glottis, है ना. epiglottis जब नीचे push होगा तो आप डायग्राम में देख सकते हैं वो क्या करेगा, ग्लोटिस को क्लोज कर देगा. ठीक है, एंड द फूड विल बी प्रिवेंटेड टू एंटर इनटू द विंड पाइप, राइट. इसीलिए जब कभी भी हम खाना खाते समय खांसते हैं या हंसते हैं, बात करते हैं, तो air will be pushed out from the mouth and this epiglottis will not be able to close this glottis properly, right? And due to that the food may enter the windpipe. food windpipe में enter कर सकता है और उसके कारण हमको cuffing होती है, right? This cuffing brings the food back into the pharynx, है ना. इसके कारण food वापस से pharynx में आ जाता है और ये जो cuffing action है ये चोकिंग को प्रिवेंट करेगा. अगर ये कफिंग से फूड बाहर नहीं आता है तो इट कैन लीड टू चोकिंग, इट कैन इवन लीड टू डेथ, एज यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ. मोर ओवर, एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि वेन एवर यू स्वॉलो टिल दैट टाइम यू कैन नॉट ब्रीथ, है ना. अगर कंटिन्यूसली आप एक बॉटल पानी पीते हैं तो यू फील ब्रेथलेसनेस. वाई? बिकॉज this epiglottis has closed your windpipe and so you are not able to breathe for that particular period of time. Okay, esophagus, it is a 30 centimeter long tube which leads to the stomach and it passes through the diaphragm, right. It opens into the stomach through the gastroesophageal sphincter. Sphincter is circular muscles which close an opening, right. So after the food from esophagus goes to the stomach, it will not be allowed to come back into the esophagus, right. The food in the esophagus passes through peristaltic action. Peristaltic action क्या है? एक wave like contraction और relaxation है which pushes the food down into the stomach, right. The stomach is a J-shaped organ. It has three parts: fundus, cardiac and pyloric, right. Fundus is that part of the stomach which is present above the attachment of the esophagus to the stomach. The cardiac is the middle part and the pyloric is the lower part of the stomach, right. The stomach bears two sphincters: the upper gastroesophageal sphincter which regulates the entry of food into the stomach, and the pyloric sphincter which regulates the exit of food from stomach and its entry into the duodenum, है ना. स्टमक जो है वो दो स्फिंक्टर से गार्डेड है. गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर स्टमक में फूड की एंट्री को रेगुलेट करेगा इसोफेगस से, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक से फूड की एग्जिट को रेगुलेट करेगा. फाइन, जब तक स्टमक का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है
तब तक पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज रहेगा, जिससे कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाए, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ लॉन्ग पार्ट, ठीक है, इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम. फाइन, we will talk about all these 3 parts in the next class, right? So students, see the video properly, look at the diagrams, learn the diagram of alimentary canal. Okay, this is the time when you can study, right? And this study, this utilization, proper utilization of this time will help you in both of these years, right? So study well, try to gain as much knowledge as you can, right? So goodbye for today. Stay at home and stay safe.